let's have the efficiency ratios. Here we have stock turnover or inventory turnover. Stock turnover is cost of goods sold divided by the average inventory. Simply means how quickly your inventory is sold out. If in a single trading business, it's that way. But if it is a manufacturing business, then you need raw material, work in process, and finished goods. So here is the finished goods. But if you have those two also, so you need to work out for each of them separately, raw material inventory, work in process inventory rate, and finished good inventory rate. But in case here, we assume that there is one single inventory. Now net sales divided by average inventory or number of units sold. There are various ways, but generally it is like this: cost of goods sold divided by average inventory. What do you mean by average here? Average means that you take the opening stocks in the beginning and the closing stock at the end of the year. Take it together, divide by 2. Simple average. But some people are of the opinion कि simple average भी ठीक नहीं होती. अगर seasonally business है तो फिर आपको और कोई different weighted average निकालना पड़ेगा. As a simple average से नहीं काम चलता. Stock turnover can be computed by employing any of the above formula. The first formula is considered to be the more reasonable, and that is what is being used actually. The second formula can be used when cost of goods sold is not known as such, but the numbers are there. The third formula is used to eliminate the effect of changing prices. Average stocks is opening stock plus closing stock divided by 2. Now this is inventory turnover rate. But if you want to find out the age of inventory, so then you have to go ahead. A high stock turnover ratio indicate efficient management of inventory because more quickly, more frequently the stocks are sold out, the lesser amount of money is required to finance the inventory. यानी इन्वेंट्री में फाइनेंस को पैसे को रखना तो काम की बात नहीं है. बेहतर है कि जो as soon as you can sell it out ताकि आप रिसीवेबल में डालें फिर रिसीवेबल से कैश कलेक्ट करें. A low inventory indicates an inefficient management of inventory. A low inventory turnover implies over investment in inventories, dull businesses, low sales, poor quality goods, stock accumulation, and accumulation of obsolete and slow moving goods, and low profit as compared to total investment. Basically अगर आप इन्वेंट्री की डिटेल में जाएं तो there are lot of things. हम इन्वेंट्री में वो चीज़ें पड़ी हैं जो पिछले 2 साल से नहीं बिकी, लेकिन हम उसको लेकर आ रहे हैं इन्वेंट्री में क्योंकि स्टिल देयर. So you have to be very careful. Acceptable normally, there is no specific criteria. Higher the ratio, better it is for the company. Now, debtors turnover rate, ratio or receivable turnover. Debtors turnover ratio, net credit sales, not the total sales, credit sales only, because receivable is out of credit sales. And again, average trade receivable. Account receivable or trade receivable same. So total receivable is sundry debtors plus bills receivables, notes receivable, whatever amount committed by the other parties to pay you during that particular year, that is your trade receivables. Importance, debtors turnover ratio indicates the number of times the debtors are turned over during a year. लेकिन जितनी जल्दी आप कलेक्शन करेंगे उतना ही बेहतर है. और आज का प्रॉब्लम ये है कि कलेक्शन इज़ मेन प्रॉब्लम, कि आप माल बेच देते हैं लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ा होता है पैसे कब आएंगे. The higher the rate of debtors turnover, the more efficient is the management. Debtors of more liquid are debtors. Similarly, low debtors turnover implies inefficient management of debtors. Basically, in financial management, these two items, inventory and receivable, we have the whole chapters how to manage these two things. Acceptable criteria, there is no rule of thumb कि कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए. टाइम डिपेंड करता है आपने क्रेडिट अपने कस्टमर्स को कितना टाइम अलाउ किया हुआ है क्रेडिट का. ऐसा नहीं है कि ओपन दे दिया है. तो देखना ये है कि हमने अगर 30 दिन का अलाउ किया है तो हमारा टर्नओवर रेट कितने दिन का बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें उसको मैनेज करना है.
Debtor turnover ratio indicates that have many times debtors as converted into cash during a given year. It reflects the credit sale policy of the company. एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे हम एवरेज इन्वेंट्री का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री जो है बाहर निकल जाती है, इसी तरह हम डेटर्स का भी देखते हैं टाइम फ्रेम कि कितने दिन में हम अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। तो फॉर्मूला सेम ही है, देखिए डेटर्स है और उसको नेट सेल से डिवाइड करें और नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि वर्किंग डेज लें, नॉट नेसेसरली, आप नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर जो है उसी को ले लें। द एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशो रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए फर्म हैज़ टू वेट बिफोर its debtors are converted into cash. The ratio measures the quality of debtors. A short collection period implies prompt payment by the debtors. It reduces the chances of bad debts. On the other hand, a high collection period ratio implies too liberal and inefficient credit collection performance. Basically, what we do in business, we have credit policies. Sometimes we have a tight credit policy, sometimes we have relaxed policies. अगर माल बिक ही नहीं रहा है तो फिर आप 30 दिन की बजाय 40 दिन का क्रेडिट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप माल सही तरीके से बिक रहा है तो आप अपनी पॉलिसी को टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक एवरेज पॉलिसी लेकर चलना पड़ता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, पेएबल टर्नओवर रेशो, तो जैसे क्रेडिटर्स डेटर्स के लिए हम देखते हैं कि हमने कितने दिनों में कलेक्शन की है, इसी तरह हम पेएबल को भी देखते हैं कि हमने पेमेंट कितने दिनों में की है, क्योंकि ये भी अगेन एक एरिया है कि क्या हम अपने क्रेडिटर्स को डिले करते चले जाएं। नो, आपने अगर उनके साथ एक टाइम फ्रेम तय किया है तो मेक श्योर दैट यू शुड पे इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आप ही को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है माल में कोई गड़बड़ करके दे देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे फिर। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ आप डेटर्स को चेज़ कर रहे हैं आप अपने क्रेडिटर्स का भी टेक केयर करें। बल्कि अब तो पॉलिसीज़ बना दी हैं कि जी गुड पेमेंट पॉलिसीज़, अच्छी कंपनियां वो हैं जो टाइमली पे ऑफ करती हैं अपने क्रेडिटर्स को। तो द रेशियो इंडिकेट्स द क्रेडिट पीरियड एंजॉयड बाय द फर्म इन पेइंग क्रेडिटर्स। और इम्पोर्टेंट रेशियो एफिशिएंसी की, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी हम अपने फिक्स्ड एसेट्स जो यूज़ कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स जो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा, उसके कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उससे टर्नओवर कितनी आ रही है, सेल्स पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेल टर्नओवर कर रहे हैं और नीचे पैसे कम हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको कहते हैं हम ओवर ट्रेडिंग। कैसे कि जी आप इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे, मशीनरी को चला रहे हैं और होता ये है कि ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर बिजनेस बंद हो जाता है। तो आप ये देखें कि आप मशीन जो ऑलरेडी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, उसके नए डिज़ाइन की लाएं, या जो भी है कोशिश करें कि उसको इम्प्रूव करें ताकि आपकी इन्वेंट्री जो ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है ये बेहतर हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स नहीं लेते एक्चुअली, इसलिए कि सेल्स की बात जो है वो तो मार्केटिंग का काम है, यहाँ प्रोडक्शन की बात है। तो कॉस्ट जो बढ़ा रही है, जो गुड्स बन रही हैं उनकी कॉस्ट, और उसको नेट एसेट से, नेट फिक्स एसेट से डिवाइड करें, नॉन करेंट एसेट्स कह लें या फिक्स एसेट्स कह लें। द रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। हायर द रेशियो, ग्रेटर इज इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए आप मशीन ला कर रख लेते हैं, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट तो पड़ गई ना आपको। इसलिए आपके तमाम जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए, उनसे जनरेट होनी चाहिए सेल्स। लोअर रेशियो मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग, या अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइज। ये दो वर्ड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इनमें। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप थोड़े से मशीनरी से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ओवर ट्रेडिंग में चला जाएगा। और अगर आप मशीन से काम नहीं ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो गई, तो ये आपकी अंडर ट्रेडिंग हो जाएगी। सॉल्वेंसी रेशियोज ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज
डेट इज़ चीपर देन इक्विटी, ये एक वर्ड है जो समझना चाहिए। नॉर्मली ये कहते हैं जी कि डेट जो है वो तो उस पर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को तो हम दें या ना दें हमारी मर्जी है। नहीं, डेट चीप इस तरह से है कि डेट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसमें हमें टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग है। और यूजुअली ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जब आप शेयर इशू करते हैं। डेट के बारे में तो ये है कि जो पैसे आएंगे आप रीपे कर देंगे, उन्हें ख़त्म हो जाएगी बात। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेट और इक्विटी को मैनेज करना है। डेट इज़ चीपर देन द इक्विटी, सॉल्वेंसी इज़ अ कंपनीज लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एंड एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। वी आर मेक श्योर कि हमारी जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलना चाहिए, उनके शेयर में ग्रोथ भी होनी चाहिए, और जो लेंडर्स हैं उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी टाइमली पे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।